proteins. In today's video, we are going to discuss your next topic, that is your single cell proteins. ठीक है? In previous video, we people have discussed your plant breeding techniques, steps that are involved in plant breeding. Then we have make plant breeding for making your disease resistant plant, right? Resistant to your insect pest and for improved फूड क्वालिटी. ये सब हमने पढ़ा इन योर प्लांट ब्रीडिंग, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड योर सिंगल सेल प्रोटीन एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट थियोरी as it is important for your MCQ purpose as well as your question answer purpose. ठीक है? So now let's begin with your single cell protein. Apart from this कुछ चीज NCERT में लिखी गई है, राइट? ऐसा लिखा है आपकी बुक में दैट कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल फार्मिंग, जो कन्वेंशनल मेथड्स होती है, राइट, फॉर प्रोड्यूसिंग योर सीरियल्स, योर पल्सेस, यू कैन से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मेनी मोर थिंग, राइट, मे नॉट एबल टू मीट डिमांड ऑफ फूड, may not able to meet food demand at the rate of which population of our country is increasing, right? Apart from this there is shift from grain to meat diet. शिफ्ट हो रहा है grain to meat diet also increases demand of cereals. What is the reason for the same? क्या reason है इसका? The reason is that for producing 1 kg meat, there is requirement of 3 to 10 kgs of cereal. Okay, once again मैंने आपको क्या बोला? There is shift from grain diet to meat diet. Okay, and 1 kg of meat, here I am writing 1 kg of your meat, right, requires 3 to 10 kg of cereals. Okay, and apart from this, nearly 25% of human population is suffering from malnutrition. Due to lack of food, you can say, or you can say due to lack of balanced food. Okay, so here what we are focusing on this single cell protein is that one such alternative method of increasing protein diet. It's an alternative method of increasing protein diet. ठीक है? Okay, so this I am going to explain by giving one example. सबसे पहला, the first one that comes is your spirulina, right? सभी ने सुना होगा ये. This is your spirulina. This spirulina is cultivated industrially. At industrial scale, इसका cultivation हो रहा है, right? What is the reason for the same? The reason is that ये जो spirulina होती है, right? This can be easily cultivated on material like wastewater. Here I am writing it can be easily grown. ठीक है? वो easily grow हो जाती है on material like, you can say, wastewater which is coming out during potato processing. Okay, इसके ऊपर ये easily grow हो जाती है. Then I can say it can easily grow on straw. अब ये straw क्या है? Straw is nothing but I can say it as your agricultural byproduct. It's an agricultural byproduct. To be more specific, ये जो है it is dry stalk. It is dry stalk of cereal plants. ठीक है? ये straw क्या होती है? Dry stalks of cereal plant. The one which is obtained after your grains are removed. इसको बोला जाता है straw. Then this can be easily grow on molasses. Now molasses क्या है? Molasses is nothing but I can say it is thick, it is brown, right? Syrup I can say it is thick brown syrup which is obtained during processing or I can say refining of sugar cane. ठीक है? ये जो है thick brown syrup कब बनता है? When that is processing of sugar cane, right? Processing of sugar cane in the sense what? जब sugar बनने की process हो रही होती है,
right? At that time there is production of this thick brown syrup जिसको बोला जाता है molasses. Apart from this can be grown on your animal manure. ठीक है, this can be easily grown on animal manure. अब ये क्या है आप सबको पता है, right? And it can be also easily grown on sewage. It can be also easily grown on sewage. ठीक है, मैंने आपको क्या बोला? One such example of your single cell protein is spirulina. This spirulina is cultivated at industrial scale, I can say, right? Can be grown easily on wastewater, right? Obtained during potato processing, straw, molasses, animal manure, as well as sewage, right? And at the very same time, it serves as food. It serves as food rich in protein, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. Am I clear? तो ये हमने किसके बारे में बात करी? स्पाइरुलिना के बारे में. Okay, what I am writing over here, of course, it serves as a food. Apart from this, it also reduces pollution. It also reduces pollution. Okay, it also reduces pollution. Simple as that, right? Because when it is acting on sewage, animal manure, right, wastewater, this straw, right? So ultimately it also reduces pollution. Simple as that, right? So ये हो गया आपका first example. ये हो गया आपका first example. Second example, if I want to say over here, is of your Methylophilus methylotropus. One estimated study says that 250 kg of cow, ठीक है, produces only 200 ग्राम of protein. कितने ग्राम प्रोड्यूस करती है? Only 200 ग्राम of proteins. 250 kg of cow produces 200 gram of protein. With the very same period, okay, this is per day. With the very same period, our Methylophilus, okay, Methyllotropus, scientific name है, you must be underline first word capital. Okay, so I can say there is a 250 gram of Methylophilus methylotropus due to very high biomass produces 25 tons of proteins per day. कितना प्रोड्यूस करा? 25 tons of proteins per day. ठीक है, so second example comes over here is your Methylophilus methylotropus. Simple as that. And third, everyone are aware of, we people are eating what? Mushroom. Right? So this all are the alternative source of proteins. So ये हो गया आपका single cell protein, right? Simple सी theory है, सिर्फ दो examples are important in this, spirulina and Methylophilus methylotropus. Apart from this, आपको ये चीज याद रखनी है, 1 kg meat require 3 to 10 kg of cereals. This is important one. So this is your single cell protein. Last topic of our chapter number 9 is tissue culture. Again, this is your important one. Now if we are talking about tissue culture, right, then the concept of tissue culture was studied by scientists in 1950s. Okay, the concept of this tissue culture was studied by scientists in 1950s. What they learned? They learned that whole new plant, most important thing it is, whole new plant, right, can be regenerated. पूरा का पूरा नया प्लांट रीजनरेट हो सकता है from explant. Okay, now
question comes in your mind that what is this explant? ये explant है क्या? Explant is nothing but any part of plant. This explant can be any part of plant. ठीक है? Okay. Specifically, it can be any cell. Okay. It can be organ, you can say, or it can be a part of tissue. So explant can be anything. It can be a single cell, it can be an organ, or it can be a part of some special tissue. Okay? So from this explant पूरा का पूरा नया प्लांट रीजनरेट होता है, and this capability is called as, इसको क्या कहा जाता है? You people have already understood totipotency in chapter cell, right? Whole new organism is produced from a single cell, that is zygote, right? And this capacity is called as totipotency. ये definition आप सभी ने पढ़ी है, right? So here, as you can see, same process हो रहा है. Whole new plant is regenerated from explant, right? तो ये कैपेसिटी को क्या कहा जाता है? टोटिपोटेंसी. This is what I mean by totipotency. Now what is done? ये जो अपने explant से, for example, you people have collected some tissue. मान लीजिए ये tissue है. Okay, red color represents your tissue, right? Now ये जो explant होता है, right? This explant you people are going to keep in a test tube, I can say. Okay, this is not test tube, let me draw it. This is a test tube, ठीक है? This explant or this tissue which we have isolated from plant is kept in vitro in a test tube, as you can see over here, in sterile condition, of course, right? Condition कैसी होनी चाहिए? Sterile condition. Sterile condition in the sense what? It must be free from microorganism. It must be free from microorganism. And इसको आप ऐसे ही नहीं रख सकते. You need to provide, as you can see over here, this is your nutrient medium. ठीक है बच्चा? ये क्या है? Nutrient medium. And this nutrient medium must have, here I am writing, देखो ये न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या चीज होनी चाहिए. नंबर 1 is carbon source. Number 1 is carbon source, which is preferably in form of sucrose. So again I am highlighting this carbon source in form of your sucrose. ठीक है? Apart from this, ये nutrient medium में होना चाहिए inorganic salts. अब भाई inorganic salts in the sense we are talking about your nutrients, micronutrients and your macronutrients that we have discussed in chapter mineral. Okay, apart from this, it must have, over here I am writing your amino acids. ठीक है? Amino acids. Then most important thing, it must have plant growth regulators, or you can say it as plant growth hormones. Again, this we people have already discussed, like your promoters, ठीक है? Auxins, cytokinins and many more. ठीक है? So these are the material which must be present in nutrient medium. ठीक है? कार्बन सोर्स, सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, आपका अमाइनो एसिड्स, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स एंड मैनी मोर. सो दिस आर the requirement of your nutrient medium. Okay, so explant आपने collect करा, you have kept in a test tube containing this nutrient medium, right? From this there will be formation of whole new plant. Simple सा process है ये. Okay, now what I am saying, by using this technique, one can produce large number of plants. One can produce large number of plants, that too in short duration.
शॉर्ट ड्यूरेशन, एंड ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज योर माइक्रो प्रोपगेशन। इसको क्या बोले हम? माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर यू हैव टू मेमोराइज इज दैट बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन जो प्रोजेनीज, जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, दे आर आइडेंटिकल टू दैट ऑफ देयर पेरेंट प्लांट। They are identical, they are copies of their parent plant. Genetic makeup of offsprings as well as parents remains same, and thus ये जो plants produce होते हैं at the end of micropropagation are called as soma clones. इसको क्या कहा जाता है? soma clone. So this is important one. So ये आपने पहली चीज पढ़ी, that is your micro propagation. What is micro propagation? By using tissue culture techniques, one can produce large amount of plant in very short duration. The process is called as micro propagation, and the progenies, the plants which are obtained by this are called as soma clones. Why soma clones? As they are identical to that of parents plant. Simple as that. Okay. Second important application. Second important application, right? I am going to write of tissue culture is that one can make healthy plant. One can make healthy plant from infected plant. From infected plant. ओके, हेल्दी प्लांट फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट। देखो से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा है कोई प्लांट, राइट, एंड दिस प्लांट इज इन्फेक्टेड वन, दिस प्लांट इज इन्फेक्टेड वन से फॉर एग्जाम्पल बाय वायरस, ओके। द पॉइंट ओवर हियर यू पीपल हैव टू मेमोराइज इज दैट जो मेरिस्टेम होता है, मेरिस्टेम इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट योर अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट योर एक्सिलरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेम मतलब क्या? द रीजियन ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर कॉल्ड एज योर मेरिस्टेम, ओके। सो दिस अपाइकल मेरिस्टेम, दिस एक्सिलरी मेरिस्टेम, दे आर free from virus. They are free from virus. Virus can never infect meristematic zone. ओके, तो सिंपल एज दैट। मान लीजिए ये अपाइकल मेरिस्टेम है, ओके, मान लीजिए द ब्लू पोर्शन विच आई एम हाईलाइटिंग ओवर हियर इज अपाइकल मेरिस्टेम। अब क्या करते हो, ये अपाइकल मेरिस्टेम को ले लिया एंड यू आर ग्रोइंग वंस अगेन लाइक दिस, यू आर ग्रोइंग इन विट्रो। इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, इन लेबोरेटरी, ओके। इसका इन विट्रो कल्चर करवाया आपने, तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट a new healthy plant free from infection, okay. So this is your second application. पहली क्या है आपकी माइक्रो प्रोपोगेशन, एज यू कैन सी ओवर हियर। सेकेंड क्या है आपका? हेल्दी प्लांट फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट, सिंपल एज दैट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर आई एम राइटिंग, ओके, third important thing is your somatic hybridization, is your, okay, here I am writing that is your somatic hybridization, okay. Now what happens in somatic hybridization? साइंटिस्ट ने सिर्फ क्या कलेक्ट करा? सिंगल सेल ऑफ प्लांट। मान लीजिए दिस आर द सिंगल सेल ऑफ प्लांट, ये हो गई उसकी सेल मेम्ब्रेन। सिंस इट इज प्लांट सेल, उसके ऊपर क्या चीज प्रेजेंट होती है? सेल वॉल, ठीक है। तो ये ब्लू कलर पोर्शन मान लीजिए इज सेल वॉल। सो दिस इज योर सेल वॉल एंड दिस इज कॉल्ड एज योर प्रोटोप्लास्ट, है ना। आपको पता होना चाहिए प्रोटोप्लास्ट का मतलब। प्रोटोप्लास्ट इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सिंपल एज दैट, ये चीज क्या प्रेजेंट है आपकी? ये न्यूक्लियस,
ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म एंड रेड रिप्रेजेंट्स योर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई मीन बाय प्रोटोप्लास्ट, ओके। सो वंस अगेन आई एम सेइंग, साइंटिस्ट ने क्या करा, प्लांट से सिंगल सेल उठाया, दे डाइजेस्ट देयर सेल वॉल, फॉलो, चलो ये उठा लिया, फॉलोड बाय विच कौन सी प्रोसेस होगी, डाइजेशन ऑफ सेल वॉल, डाइजेशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल मैंने डाइजेस्ट करवा दी, तो अब मेरे पास क्या बचा, व्हाट आई एम हैविंग, ओनली प्रोटोप्लास्ट, ओनली प्रोटोप्लास्ट। वंस अगेन प्रोटोप्लास्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन विच आर सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म टुगेदर कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। सो दिस इज आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ये क्या हो गया आपका, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। नाउ व्हाट साइंटिस्ट डिड, दे collected this protoplast of two different varieties and they fused this protoplast to obtain hybrid protoplast, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखो ये हो गई आपकी, से फॉर एग्जांपल दिस इज योर वेराइटी नंबर 1, ठीक है। ऐसा ही सेल वेराइटी 2 से आइसोलेट कराया, उसकी वॉल डाइजेस्ट कराई, तो वंस अगेन ये सेकेंड वेराइटी है, ठीक है, उसका आपको प्रोटोप्लास्ट मिल गया, सिंपल एज दैट। फॉलोड बाय विच क्या करवाया होगा, फ्यूजन ऑफ दिस 2 आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट which results in formation of hybrid protoplast, and this hybrid protoplast have combination of both these varieties, ठीक है। एक एग्जांपल आपकी बुक में लिखा गया है, से फॉर एग्जांपल दिस इज पोटैटो, पोटैटो का ये प्रोटोप्लास्ट है। से फॉर एग्जांपल दिस इज प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो, पोटैटो प्लस टोमेटो, न्यू वेराइटी जो है इज कॉल्ड एज योर पोमेटो, क्या बनती है, पोमेटो बनती है। बट अनफॉर्चुनेटली this is not commercialized, okay। So these are your tissue culture program, micro propagation, okay, regeneration of new plant from infected plant, and ये process को कहा जाता है somatic hybridization, somatic hybridization जहाँ पे होता है protoplast fusion, okay। So this is all about your chapter number 9. I hope this is very clear to all people. Thank you very much.